तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ऊपर से जा रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है बेटा नहीं आ रहा? आ रहा है, चलो बढ़िया। ओके। सो एक क्वेश्चन और करो एंड फिर हम थोड़ा सा नया टॉपिक पकड़ते हैं, ठीक है? सो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, sorry, not limit n tends to infinity. You just do this summation n raised to power ln n z raised to power. What will be the radius of convergence for the same? You just find me the radius of convergence. Just find me the radius of convergence. So what you do? So here you are confused quite. So what you will do? You'll simply try to find limit n tends to infinity. Why I'm saying ratio test will fail here? Because see, ratio test would let you do n plus one. So this will become very complicated structure. ln n plus one raised to power ln n plus one divided by n raised to power ln n. How do you find the limit for the same? So it's better to go in this fashion. So 1 over r would be equals to limit n tends to infinity n, and I would write as ln n raised to power 1 over n. Okay. And whenever you have such structures, so what is the best strategy? You just take log on both sides. So taking log on both sides will help you. So ln 1 upon r will be equals to what? 1 upon n. And always remember, in uh, till the things are not very complicated, you can take limit of log on both sides. So limit of log is equal to log of limit. No issues about it. So you'll get log n raised to power ln n. So log, so this is how it is. Is it clear to you? Okay. Is it clear to you? I've taken log on both ends. So this is log to the base e. Here also it is log to the base e. Is it clear to both everyone? So what you'll get, you'll simply get log 1 over r is equals to what? It is equals to 1 upon n. And this will give you ln n will come in front because log a raised to power b is b ln a. And again, you will be finding ln n. So you're having two ln n here. So you will find ln n raised power 2 divided by n, and this is ln 1 over r, and n tends to infinity. Now, how to proceed further? So you have two things. You have two. So numerator also goes towards infinity. Denominator also goes towards infinity. So this is an infinite by infinite form. So this is you can do by L'Hospital rule. Simply differentiate the above. That will give you ln n into 1 over n, and the derivative n with respect to n would be 1. Again, you are left with infinity by infinity form, again differentiated. So again differentiated, above derivative will give you 2 by n, and the denominator ln is simply n, so it will give you 1. So this will become n tends to infinity पे क्या हो जाएगा बेटा? 0. So this will become 0. So ln 1 over r is 0. It implies r is equal to 1. So what is the radius of convergence? The radius of convergence would be r equals to 1. Where would this series converge? So this will be the case. So it will converge for all mod z minus 0 less than 1. So it will converge in a unit circle. Are you getting the point? यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ या ना, फटाफट बोलो। सर हाँ बेटा बोलो। सर कन्वर्ज इन यूनिट सर्कल मतलब क्या है सर इसका? देखो, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना रहा? 1। देखो, इसका मतलब ये कन्वर्ज यस। कहाँ करेगा? पावर सीरीज वुड कन्वर्ज फॉर मॉड z माइनस z नॉट लेस देन r, ये लिखा था पहले। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, ये सीरीज कहाँ कहाँ पे है? इट इज बीइंग एक्सपेंडेड ऑन z माइनस 0 का पावर n। इसको z की पावर n को लिख दो, z माइनस 0 की पावर n। ये z नॉट की जगह क्या ले रखा है तुम्हारे? z ने, 0 ने ले रखा। इट इम्प्लाइज योर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इज मॉड z लेस देन। ओके। और मॉड z लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? इट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड द यूनिट सर्कल। मॉड z इक्वल टू 1 क्या होता है?
यूनिट सर्कल। मॉड z लेस देन 1 क्या बताएगा? फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड द यूनिट सर्कल। आर यू गेटिंग वो पॉइंट? सर जैसे सीरीज रहती है, हम उसकी कुछ समय मतलब उसकी कन्वर्जिंग वैल्यू निकालते हो, सिंगल वैल्यूड आती है ना वो। तुम ये कहने की तो कोशिश उस कर सेंस रहे हो। में पूछ रहा था मैं। हाँ, उस सेंस से पूछ रहे हो ना, तो वो ऐसा बोला जाता है कि वो जो सिंगल वैल्यू आ रही है वो किस पर्टिकुलर रीजन के लिए आ रही है, मतलब फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ व्हाट वैल्यूज ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। व्हाट से जो तुम बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ। तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो सीरीज है इट विल बी कन्वर्जेंट समवेयर, it will be convergent somewhere, मतलब it will give me some answer, right? Some single valued यस answer. सर। But for यस what सर। values, for what region it will give me uh, that particular value? मतलब समझने की फॉर कोशिश व्हाट? करो जैसे फॉर व्हाट अगर वैल्यूज ऑफ जेड? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z, तो इन सारे पॉइंट्स के लिए ही वो कन्वर्जेंट होगी, मतलब इन सारे पॉइंट्स में से तुमने कोई पॉइंट दे दिया इसको, ओके लेट्स से e की पावर z में मानता हूँ। ठीक है, तुम कह रहे हो कि हाँ e की पावर z में क्या मैं 1 रख सकता हूँ? मैं कहूंगा हाँ, रख सकते हो। आंसर विल कम एज e की पावर 1। अब मैं कहूंगा ऐसा मत करो, यू जस्ट प्लेस दिस इन द सीरीज 1 + z + z² 2 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, और एक इन्फिनिट सीरीज बन जाएगी। इस पे 1 रखने से भी आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि e की पावर z कैसा फंक्शन है? एंटायर फंक्शन है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब इस पूरे प्लेन पे तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, यू पिक दिस पॉइंट अप, यू प्लेस दिस पॉइंट इन द सीरीज, यू पिक दिस पॉइंट अप, यू प्लेस द पॉइंट इन द एक्सपोनेंशियल, यू विल गेट द सेम आंसर। सो हम ये कहते हैं कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस वो रीजन है जहां पर यू कैन राइट योर फंक्शन इन पावर सीरीज। जैसे कि इस फंक्शन के लिए मैं कह रहा हूं, तुम कोई भी वैल्यू ले लो, किसके अंदर? मॉड z लेस देन 1 के लिए। लेट्स से तुमने वैल्यू ली 1/2, 0। तुम सर्कल, तुम एक काम करो सीरीज में प्लेस करो, तुम एक काम करो अपने फंक्शन प्लेस करो, तो द आंसर विल बी द सेम। सो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए योर सीरीज इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब इट विल गिव यू सम सिंगल आंसर। जो तुम कह रहे थे ना कि सीरीज को करते हैं तो कुछ एक सिंगल आंसर आता है, इट विल गिव यू सम राइट सिंगल सर। आंसर। दिस इज व्हाट इट। पर ये सिंगल आंसर किन सारे z के लिए पॉसिबल है? इन सारे z के लिए पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर ये सीरीज कन्वर्जेंट है। बियॉन्ड इट इट इज डाइवर्जेंट, बियॉन्ड इट इट इज ओके सर। डाइवर्जेंट। हम्म। और सर डोमेन डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये रहा तुम्हारा रेडियस। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, ये पूरा रीजन को डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बोलूंगा, ठीक है? या फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब इस पूरे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इस पूरे रीजन को मैं मतलब इस पूरे जो शेड किया ये रीजन है, और ये कहां तक जा रहा है उस रेडियस को मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देखो समझने की ओके कोशिश सर। करो। लेट्स से मैं तुम्हें e की पावर z से समझा रहा हूं, तो e की पावर z के लिए मैं कहूंगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिट आता है, कल तुम देखना मिलेगा तो। लेकिन उसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? उसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा ये पूरा, मतलब मॉड z लेस देन इन्फिनिटी, मतलब एंटायर कॉम्प्लेक्स पे। इसको बोलोगे तुम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। और अगर तुमसे कोई बोले व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यू सिंपली से r इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, बात समझ में आई आप तक? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करो। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर यूनिट सर्कल, इनसाइड यूनिट सर्कल, मतलब तुम यूनिट सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट उठा लो, यू जस्ट प्लेस दैट पॉइंट हियर, यू जस्ट प्लेस पॉइंट इन द सीरीज एक्सपेंशन, मतलब इस फंक्शन के अंदर प्लेस करो, और ये फंक्शन जिसका भी सीरीज एक्सपेंशन रहा होगा, जिसका भी ये फंक्शन, जिस ये जो सीरीज एक्सपेंशन है किसी का तो सीरीज एक्सपेंशन रहा होगा ना, उसमें प्लेस करो, इसमें प्लेस करो, बात है कि विल गेट द सेम आंसर। दैट इज, तुम कोई भी पॉइंट उठा लो मॉड z लेस देन 1 के लिए, इस सीरीज में डालो, यू विल गेट सम आंसर। वो जो तुम कह रहे हो ना सिंगल आंसर आएगा, हाँ आएगा, लेकिन किन वैल्यूज के लिए? ओनली फॉर वैल्यूज मॉड z लेस देन 1, क्योंकि मॉड z ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट होगी, नॉट कन्वर्जेंट। For mod z equal to 1, there is an ambiguity. So there I have to see for further, I do need further needs to see, further points, further hints to say whether it is convergent on the circle or not on the circle. For that, I need certain more, you can say hints also. Uh, यहाँ तक समझ में आया कि ऊपर से चला गया है? यस सर। धीरे धीरे बैठ जाएगा, ठीक है? द ओनली पॉइंट इज कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को, ठीक है? अदरवाइज थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। लेट्स से और तुम सर मुझ, कल मैं हाँ पूछो। सर कल मैं वो क्वेश्चन देख रहा था, उसमें सर जस्ट में क्वेश्चन पूछा था कि एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी थी और पूछा था व्हाट वैल्यू टिल कन्वर्ज टू, तो वो हम्म। कैसे निकालेंगे हम?
मुझे एक बार ग्रुप पे डालना, मैं बता दूंगा वो भी। ठीक है, जी क्योंकि हो सर। सकता है वो सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है इधर से नहीं है, तो वो भी आता है, तो वो सीरीज अपन अलग से टॉपिक पढ़ लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा इससे टॉपिक्स अलग नहीं हटेंगे, तो सीरीज इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। अभी के ओके लिए फॉर सर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली इससे हो जाने चाहिए। नहीं होंगे तो हम सीरीज के 2 लेक्चर्स देख लेंगे, एंड 2 लेक्चर्स में सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। सीरीज मतलब जो तुम जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, कि सीरीज कहाँ कन्वर्ट करती है, और मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा क्वेश्चन भी बता तो क्या होगा। मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा क्वेश्चन रहा होगा, आई थिंक 1 आई थिंक 1/3 प्लस 1/5, ऐसा कुछ पूछा गया होगा, +1/7 -1/9, ऐसा करके कुछ पूछा गया होगा, आंसर आएगा π/4। ऐसा कुछ पूछ रहे हो क्या? और प्रॉब्ली दिस क्वेश्चन, आई थिंक 1 - 1/2 plus 1/3 minus 1/4, this converges towards ln2। इस तरह का कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होगे, राइट? Okay, so all these questions we'll do separately in a lecture thing called as series. So I'll teach you some basics of series and as to how you should see कि series कहाँ convergence समझो। convergence का मतलब जो तुम कह रहे हो ना कि ये चीज π/4 बन रही है, पर ये π/4 किस रीजन के लिए बन रही है? या फॉर एग्जाम्पल तुम कह रहे हो ये सीरीज ln2 बन रही है, तो ये सीरीज किस रीजन के ln2 बन रही है, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट से जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस तरह की कोई चीज करूं तो आंसर आ जाए। मतलब लेट्स से ये अलग ln1 + x, ये तो देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे हो इस सीरीज को, तो कहते हो तो x - x² / 2 + x³ / 3 प्लस सॉरी -x⁴/4 ऐसा कुछ लिखते हैं। तुम पूछोगे यार ये सीरीज जो है वो कहाँ लिख सकता हूँ, देखो बुक के अंदर आगे लिखा रहता है mod x < 1। या फिर तुम ऐसे कहते हो कि 1 + x⁴ है, और मैं इसको लिख देता हूँ 1 + nx + n × n-1/2 x² और so on and so forth। तो तुम पूछोगे यार ये बाइनोमियल सीरीज है, मैं कहूंगा हाँ, पर तुम कहोगे ये कहाँ एक्सपैंड कर सकते हो इस तरीके से, आंसर इज फॉर ऑल mod x < 1। लेट्स से तुम मुझसे ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हो, तो a + ar + ar² - - तुम मुझसे कहते हो कि ये जो सीरीज है इसका लिमिट इन्फिनिटी फॉर्मूला आता है a/1 - r। तुम कहोगे यार ये कब पॉसिबल है कि ऐसा हो, ओनली इफ कॉमन रेशियो इज < 1। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशंस रीजन के ऊपर, और हालांकि यहाँ तो कंडीशन मैंने कॉमन रेशियो पे दे दी, पर रीजन पे कंडीशंस होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि log 1 + x इस तरीके से लिखा जाता है फॉर दिस रीजन। सो आई वुड से माय सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x। फॉर ऑल mod x greater than 1 I cannot say the same, and for mod x equal to 1 I'm again in a doubt, I will have to see। So the test, like ratio test, becomes inconclusive on equality. So there you need some extra hints also. So overall, you can say for mod x < 1 it is convergent। Are you getting my point? I hope you are getting my point। ऊपर से तो नहीं गया? Yes or no? फटाफट बोलो, फिर आगे बढ़े। ओके, सो चलो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स लिखते हैं इसी पे ही, जिससे कि तुम्हें चीजें समझ में आए। ठीक है, सो लेट्स से व्हाट इफ सिंगुलैरिटीज आर देयर। भरत समझ में आ रहा है? ऊपर से चला गया, फिर पूछ लो एक बार। कहाँ गया भरत, कहाँ गया? ये सब कुछ सुनाई दे रही मेरी आवाज, कल्पना को, मोनिका को? हाँ जी भैया। तुम तो हाँ बोल दो। व्हाट, तुम्हारे को नहीं समझ में आया तो पूछो। आगे। Okay, so what if singularities are there? So what if singularities are there? And why it becomes so important? Because at times in examination, you're not supposed to find the entire Taylor series. Okay, that becomes too tedious a task to do in exam. Okay, so what you would do, so let's say if I'm saying my series has certain singularities, can we really expand that particular series about those particular points in a form of Taylor series? So answer is no. So if you have singularity at z equal to z0, you cannot expand your function fz, cannot expand your function fz about z equal to z0 in Taylor series expansion. Okay, understand this point. Okay, and let's say if there are certain singularities, let's say not only z, if there are z not, if there are many singularities, let's say n singularities, what can be done? So if I'll say that my function fz is analytic except these points, excepting these points,
except these points. Then, so let's say if I'm saying, मैं easy होने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ. Let's say these are the points of similarities. Let's say Z1, let's say Z2, काम करते इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं. Let's say एक मिनट रुको, let me थोड़ा सा टाइम दो. ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे कि इस तरह का कुछ है. ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो Z1 पे सिंगुलर है, Z2 पे सिंगुलर, और फिर मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये मत कह देना कि ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए तुम्हें समझाने के लिए. एंड लेट्स से Zn यहाँ पे सिंगुलर, मतलब यहाँ पे तुम टेलर सीरीज एक्सपेंशन नहीं कर सकते, बाकी थ्रू आउट एनालिटिक है. सो माय फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है, एंड इफ आई एम लेट्स से आई एम एक्सपेंडिंग माय सीरीज इन Z0. So if I'm expanding my series about Z0, let's say Z0 is origin itself. So what can be the maximum radius of convergence where your series is convergent? So clearly, I've said that I cannot expand about Z1. So if I just take my radius of convergence less than this, I'm done. What if I take a radius of convergence more than this? Then I will encounter this singularity, Z1. Yes or no? So what can be the answer to it? It is not necessary that Z1 appears here. It may be possible Z2 comes here, Z1 comes here. I have not written Z1, Z2 in a like this fashion. It is not necessary that Z1, Z2 come in this fashion. It may be possible that Z2 may be here, Z1 may be here, so on and so forth. So what is the possibility? The possibility is that the radius of convergence at maximum can be the distance between Z1 and Z0. Yes or no? This can be the minimum radius of this can be the radius of convergence. That is, the best I can do is, if I have to expand about my function about Z equal to Z0 in a Taylor series, I have to refrain myself from including this Z1, because if I include Z1, Z1 is a point of singularity. I cannot expand my Taylor series about this point. So what I would do, I would simply write the radius of convergence in such a manner that it is the distance between Z1 and Z0. And if I'm not knowing which one is smaller, which one is bigger, so what I would do, I would simply say that the radius of convergence of fz with such conditions, that is, it does have some singularities at z1, z2 dash dash zn, would become as minimum of the distance between z0 and zi. So, are you getting my point? ये ऊपर से चला गया. यस सर, क्लियर. ठीक है, मिनिमम क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है Z1 ही मिनिमम हो, मतलब समझ रहे हो, मतलब मिनिमम नहीं कह सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट अंडरस्टैंड द पॉइंट कि जरूरी नहीं है Z1 ही हो सकता है Z2. मतलब Z1 Z2 मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं सेट कर रखा है, तुम समझने की कोशिश करो. मतलब यहाँ Z1 हो सकता है यहाँ Z2 लिखा हो. समझ रहे हो, मतलब जो भी पॉइंट नियरेस्ट है, जो भी सिंगुलैरिटी नियरेस्ट है, यू कैन राइट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वुड बी द डिस्टेंस of the center of the power series. ऐसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, center of the power series, that is Z0, with the nearest singularity. Okay, and why it is handy, let me tell you with an example which came in the NET examination. So let me give you an example which came in the NET examination only. So, and Bharat, you do one thing, you just keep putting all these TFR problems, okay? So that the TFR things will be covered there itself. Daily, whatever questions you see, whatever, even if you solve them up, you just place them up. Because TFR is always going to innovate with questions. NET is quite redundant. They would ask the same question time and again. So there is no such uniqueness in the question. TFR creates some sort of uniqueness every now and then. Okay, sir. Okay. Okay. So what to do? Let's say if I'm giving you a question of 1 upon, I think, cos hyperbolic it was or something. Ek minute mujhe do, just give me a minute. Let's say this was the question. So this appeared in my exam only, that is why I'm asking. Okay. So what is the radius of convergence of the Taylor series? Radius of convergence of the Taylor series expansion of, what is the radius of convergence of Taylor series expansion of 1 upon cos hyperbolic x about x equal to 0?
Okay. And many of my friends who attempted this examination were in quite a fix as to what to do. Because see, Taylor series as expand करना इतना आसान नहीं है. No doubt you can say that क्या है इसमें? Cos hyperbolic is nothing but e raised to power x upon plus e raised to power minus x upon 2 तो you will write. It is not easy. It is not that easy. And then you have to find some limiting formulas. I think an plus 1 upon an and all those stuff. I would not go by this fashion. My idea would be to do this. So let me first find what is cos hyperbolic. So cos hyperbolic x is e raised to power x upon plus e raised to power minus x upon 2. This is your cos hyperbolic x. Yes or no? And let me find what all points are there where it is singular. So this will be singular at all these points, isn't it? So it will be singular where e raised to power 2x is minus 1, or you can write e raised to power 2x is equal to e raised to power iota 2n plus 1 pi. I hope it is clear. So it will be singular for all. हाँ जी, यहाँ तक कोई problem? Yes, sir. So it will be singular for 2n plus 1 iota here लगा दो और pi by 2. And you start placing n equal where n belongs to z. Okay. So what I can do, एक काम करो यहाँ पर एक अपन सेगमेंट बनाते हैं इस तरीके से कुछ. इससे अच्छा मैं काम करता हूँ. ठीक है. ठीक है. लेट्स से मैंने बनाया तुम्हारा एक, ये बनाया मैंने दूसरा. These are accesses. Okay. And let us start with the writing z equal to 0 here. Okay. इसके अबाउट एक्सपैंड करना है, सॉरी x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे z की जगह x दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस अपने. अब देखो एक बार मार्क करना चालू करते हैं. n की जगह 0 रखो, n की जगह 0 को तो क्या आएगा, आयोटा पाई बाय 2 आएगा. मानते हो मैंने यहाँ कोई गलती तो नहीं करी? चेक कर लो एक बार. देखो यही आएगा ना. सही है सर, सही. ठीक है. यहाँ पे आएगा पाई बाय 2. ठीक है. फिर n की जगह 1 रखो, कितना आएगा? आई थिंक इट विल बी 3 पाई बाय 2. 3 pi by. Then it will be some 5 pi by 2, and so on and so forth. And will they be equally spaced? Yes, they would be equally spaced. Okay. So minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 5 pi by 2, so on and so forth. Okay. अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो. What is the maximum circle that you can make where you are not going to encounter any sort of singularity? My question is, Pi what by is the 2. what is the maximum circle that you can draw? Okay. What is this? What is the maximum radius that you can draw? So it is fairly easy to see that the circle will have this kind of radius. Okay, you cannot go beyond it. Can you go beyond it? Because if you go beyond it, you are certainly going to encounter this kind of singularity, that is pi by 2. So what is the radius of convergence of this circle? The radius of convergence of this circle is pi by 2. A single line answer, game over. The radius of convergence of this power series will be pi by 2. Otherwise, you would have been done and dusted in the examination only by doing this question. ठीक है. पूरा एग्जाम निकल रहा था, तुम e की पावर x plus e की पावर minus x upon 2 लिख रहे होते, फिर डेरिवेटिव्स निकाल रहे होते, and it would have been a mess in the examination. What they wanted to ask was simply this, कि तुम क्या करो, you just find cos hyperbolic singularities. The singularities are these. You just find कि इससे beyond जाने के बाद difficulties होंगी. So minimum, so what is the answer? The minimum distance between the center and the nearest singularity. बस खत्म. So answer is pi by 2. So radius of convergence would be pi by 2. Yes or no? समझ में आई मेरी बात? Yes sir. Yes sir. Yes. ठीक है. Because you can write this particular thing in power series only for mod x minus 0 less than pi by 2. Because beyond it, there would be singularities. So I can write that this is your radius of convergence. Yes or no? समझ में आ गई बात? Okay. Yes. कल्पना को समझ में आई बात? हाँ भैया. ठीक है. ये इस तरीके से करने होते क्वेश्चंस. ठीक है. क्योंकि वो तुमसे वहां पे कोई घास नहीं खुदवाएंगे, पर घास खोदने पे आ जाए तो चलो ये क्वेश्चन करके दो. obtain लेट्स से मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, टर्म्स अप टू, जिससे कि तुमको थोड़ा सा एक आइडिया लगे, टर्म्स अप टू z क्यूब in the Taylor series expansion of fz is equals to z square
प्लस साइन स्क्वायर जेड अपॉन 1 माइनस कॉस जेड अबाउट जेड इक्वल टू 0। अच्छा, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये जो बचपन में पढ़ते थे ना मैक्लॉरिन सीरीज, वो क्या होती थी? टेलर सीरीज का स्पेशल केस है मैक्लॉरिन सीरीज, जहां पे आप क्या कर रहे हो, यू आर एक्सपेंडिंग अबाउट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो ये तुम पढ़ते हो ना साइन एक्स की सीरीज, कोसाइन एक्स की सीरीज, बेसिकली दे आर नथिंग बट ओनली अ स्पेशल केस फॉर टेलर सीरीज। सो ये तुम लगा सकते हो यहाँ पे, मतलब इफ यू वांट टू राइट, मतलब अगर तुम्हें सीरीज याद है तो सीधे लगा सकते हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम डेरिवेटिव्स निकालने की कोशिश करो। ठीक है, इफ यू नो द सीरीज ऑफ साइन जेड कॉस जेड, देयर इज नो इशू, सीधे यूज करो। मतलब समझने की कोशिश करो, इसको डिफरेंशिएट मत करने बैठ जाना, पागल हो जाओगे पूरे एग्जाम में। अगर तुम्हें टेलर सीरीज पता है साइन जेड की कॉस जेड की, ट्राई टू यूज देम एंड ट्राई टू राइट देम। समझ पाएंगे मेरी बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? What's मतलब in what's in the denominator? 1 minus cos. 1 माइनस कॉस जेड। Okay, sir. Okay, so let me try my hands in it on it and let us do. Okay, so how to go about it? तुम simply क्या कर सकते हो? देखो, simply you know that इसको expand अगर करना है तो simply use sin z as z minus z cube upon 3 factorial plus z की power 5 upon 5 factorial so on and so forth. तो एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए व्हाट इज द लीडिंग टर्म और ऐसा कुछ। ठीक है, कोसाइन z will be equals to what? Cosine z will be equals to 1 minus z square upon 2 factorial। और ये याद कर लो प्लीज ना, इसको भूलना नहीं है एग्जाम से पहले भी और अदरवाइज भी नहीं भूलना है। ठीक है, ठीक है, सो सिंपली एफ जेड वुड बी व्हाट? एफ जेड विल बी इक्वल्स टू जेड, आई थिंक आई वुड राइट जेड स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जेड। साइन स्क्वायर जेड विल बी जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इनटू, सॉरी एक बार एक काम करो, डिवाइड ही कर दो, अपॉन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल सो ऑन। ठीक है, यहां तक समझ में? सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली राइट इट इन दिस फैशन, एफ जेड इज इक्वल्स टू व्हाट? यहां से स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर, एक काम कर सकते हो, ऊपर वाले से तो तुम कॉमन ले ही सकते हो ना, यू कैन टेक कॉमन आउट एज जेड स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस जेड स्क्वायर, अंदर क्या रह गया? 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, अपने को जेड क्यूब तक ही रहना ना, तो अपन एक काम करते हैं, आगे पढ़ते नहीं, लेट अस नॉट गो अहेड, देयर इज नो पॉइंट गोइंग अहेड, की पावर 2। और इस होल की पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है? माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल होल रेस्ट पावर माइनस। Plus z square by 2 factorial कहाँ denominator पे में। सॉरी, कहाँ? सर डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 माइनस cos था। अच्छा सॉरी, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, सॉरी। ठीक है, तो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? जेड स्क्वायर ओवरऑल पूरे टर्म से, अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसके आगे के टर्म्स क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सोचो ना, ये जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, समझ रहे हो मेरी बात? ये ऑलरेडी जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, और सो ये वाले टर्म्स नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? अगेन जेड स्क्वायर, सो यू विल गेट, यहाँ जेड स्क्वायर कॉमन लोगे पावर -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पावर -1 से जेड की पावर -2 बाहर आएगा, तो अंदर क्या रहेगा? -1 माइनस, सॉरी -1 +1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस, सॉरी अगेन प्लस है माइनस है, प्लस, सॉरी प्लस, आई थिंक जेड की पावर 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल सो मच। ठीक है जी,
अब इसी चीज को आप क्या लिख पाएंगे, यू कैन राइट इट इन दिस वे, एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 1 माइनस जेड स्क्वायर, अगर पावर 2 लगाओगे इसके आगे तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, अंदर चला जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 24, और इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, इवेंचुअली व्हाट आई विल सिंपली गेट, आई थिंक 1 2 माइनस जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 24, ऐसा कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने कुछ गलती भी करी होगी तो प्लीज चेक कर लेना। दिस विल गिव यू आई थिंक देयर इज सम एरर, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। अच्छा, ये जेड स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लिया होगा ना, जेड स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2, जेड स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई थिंक 2, फैक्टोरियल तो नहीं आएगा, और बाकी सब कुछ बाहर में जानते, सो दिस विल गिव यू 2 आई थिंक, नहीं नहीं 12 सॉरी, क्योंकि 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो अगर जेड स्क्वायर बाय 2 पूरा ही कॉमन लोगे और जेड स्क्वायर अपॉन 2 अगर यहाँ कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, आई थिंक 2 भी आएगा, दिस विल बी 1, आई थिंक दिस विल बी 2 हियर। देखो ध्यान से समझना, ये जेड स्क्वायर बाय 2 कॉमन लोगे ना, देखो दिस सॉरी माय बैड, जेड स्क्वायर बाय 2 कॉमन लोगे ना, तो जेड स्क्वायर बाय 2 कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाय 2 की पावर माइनस 1 ही तो आएगा, और जेड स्क्वायर बाय 2 की पावर माइनस 1 क्या होगा, जेड की पावर माइनस 2 अपॉन 2 की पावर माइनस 1 मतलब 2, तो 2 तो ये हो गया, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टर होता है 24, तो हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल होता है 300 एंड सॉरी 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो ये हो जाएगा 360। ओके, पर इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज मैंने बोला अप टू पावर 3 निकालना, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं, भूल जाओ इसको, इसके आगे वाले टर्म्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं, भूल जाओ इसको। सिंपली तुम्हारे पास रह जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 12, और यहाँ इंटू 2 आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये 2 मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आई थिंक इन इंटू 2 यहाँ कर लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आंसर बनना चाहिए मेरे सबसे वो ये होना चाहिए, इट विल बी सम 4, सॉरी इट विल बी सम 4 2, अंदर करो 2 माइनस, इसको करो माइनस जेड स्क्वायर आई थिंक, और 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 12, और आई थिंक नॉट 12 इवन, दिस विल बी शायद 12, so this will be z square upon 6 I think, if I'm not wrong। ठीक है, और एक और चेक कर लेना यार, प्लस सम पावर टर्म, पावर ऑफ 4, और उन सबको भूल जाओ, ठीक है। So eventually you will get what? I think there is some error with the question. Some error I have made. I don't know where. You just check this question out. Okay. So in any case, you will get some powers of. So you will get some 4 minus some 2 times z square plus z square upon 6, and then there will be some higher order terms. Okay. So this is how you can do. So तुम्हें up to 4 और up to 3 लिखने को कहते हैं तो तुम यहीं तक लिख के खत्म कर दो। I know I have made some mistake somewhere. You just see in this particular thing where I have made a mistake. ठीक है, इसको देख लेना। I don't think इसमें बहुत ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत है। But overall understand the term. कोई तुमसे बोले what is the leading term? Answer would be 4. Okay, what is the leading term? Answer would be 4. Okay, higher order terms I'm not expecting that you to write because that will become too tedious a task to do. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। Okay, नहीं आते because तुम सोचो इसमें कहीं एक गलती करी then you are gone. So mostly they will not ask such questions in exam. But now my question arises, what is the radius of convergence for this series? You just tell me what is the radius of convergence for this series. What is the radius of convergence for this series? Try to find this. Okay, so what is the mistake that I did? I think this is the mistake what I did. So this is not, I think, here if you take z common, so you get z square by 3 factorial. Okay, so this is 3 factorial. This is 6 here. And this will be equals to 2 आगे लेके जाओगे तो z square by 3 आएगा यहाँ पे। Okay, so what is the mistake that I did? यहाँ पर भी z square by 3 आएगा। Okay, so you'll get z square by 3 here. So z square by 6 minus, और
I think there is some mistake here also. Okay, let me see. अगर मैं इसको अच्छा power -1 लग रहा है, so here it is a power -1, my mistake. So here it is a power -1. So this power -1 would add it up here, और ये सारी चीजें, it is very tedious thing to do. ठीक है, तो यहाँ पर I think आएगा प्लस, so this will give you minus z square. ठीक है, this will give you minus z square, just write it in this fashion, minus z square plus z square by 6, or I think this will give you, I think overall this term would end up being minus z square by 6 into 2. So you'll get, I think, 4 minus z square by 3 or something of this sort. Try to see. ठीक है, हायर टर्म आएंगे z की पावर 4 में, we are not interested. ठीक है, so try to see, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से. Just try to see. So this will be the term 4 minus z square by 3. Okay. Now, what will be the radius of convergence for this series? So अगर कोई एग्जाम में पूछ ले, you are bound to leave this question, because see, you already know this is so difficult thing to do. Already we made mistake while doing the same. So please बीच में रोक दिया करो, कुछ गलती हो रही हो ना तो बोल दिया करो, because मेरा हाथ ऊपर तो देख नहीं पाता हूँ ना, that is why I'm saying. Please do tell me, कहीं पे गलती हो तो please रोक दिया करो. So z square by 3, this is z square by 6, and थोड़ा सा आके solve करते जाओगे ना तो you'll find 4 minus z square by 3 plus order of z की power 4. How to find a radius of convergence for this series? This will be very difficult for you. Okay, तो क्या करोगे एग्जाम में? देखो, आपको फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन आई थिंक दे रखा है z स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर z, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसाइन z. ओके, सो देखो, दिस इज फेयरली एनालिटिक, दिस इज फेयरली एनालिटिक, देयर इज नो अबाउट इट. प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर, और वो भी कहाँ, cos z इक्वल्स टू 1 पे. तो cos z इक्वल टू 1 मतलब क्या होगा? e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मानते हो? ये सॉल्व लो एंड जस्ट सॉल्व देम. Just solve them. So try to solve this equation. So what you will get, you'll simply get e raised to power 2 iota z. This will give you e raised to power 2 iota z minus 2 iota z plus 1 equals to 0. Are you getting my point? यहाँ तक समझ में आई मेरी बात? Yes or no? फटाफट बोलो बेटा. So you will get a series in e raised to power iota z is equals to 2 plus minus b square, this is 4, minus 4ac upon 2. So minus 2 का square होता है 4 b, this is a quadratic equation in e की power iota z. If you keep e की power iota z as some x, this is x square minus 2x plus 1. So what you are getting? You are getting e की power iota z is equal to 1, and what is the answer? Z is equal to 2n pi. So at z equal to 2n pi, you are bound to meet singularities. Okay, yes or no? So if I just try to write it all over, I told you we have to expand it about z equal to 0. So if you expand at z equal to 0, what sort of singularities you are going to meet? At 4 pi, 2 pi, 6 pi, here you will find singularities, minus 2 pi, minus 4 pi, so on and so forth. Here you will find the singularities. So what is the circle that you can make around z equal to 0 where you can rescue all these singularities? The circle is this. So what is the radius of convergence? The radius of convergence will be equal to what? 2 pi. So this is a tricky question. It may be asked in the examination that just try to find the Taylor series expansion up to certain terms. I don't think beyond cube anybody is going to ask, because this is too much of algebra to do in the exam. Okay, overall understand my point. This may be asked that what is the radius of convergence for this series. So radius of convergence I think would be 2 pi. यहाँ तक बात समझ पाई? Yes or no? हाँ जी. ठीक है. So I hope I'm concluding the lecture here on. Tomorrow we'll start with Lorentz series and again singularities, and from the day after we'll start with this integration part. That is mostly something that comes in the examination. Okay, so now we are heading to almost half of the complex analysis has been done and dusted. Okay, भरत समझ में आ गया? I hope it is clear. हाँ जी सर, क्लियर है. चलो जी, सर चल हाँ बोलो. उस टाइम मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था. मैं वो क्वेश्चन सीरीज वाला शेयर कर दूंगा ग्रुप में सर. हाँ हाँ, डन डन, तुम कर देना. ओके सर. ओके जी, थैंक यू सर. ओके जी.